टारगेट प्लेस से दूसरी टारगेट प्लेस में पहुंचे, मगर कॉर्डन इतना टाइट था कि उनकी दूसरी कोशिश भी एस्केप करने की जो है वो नाकामयाब हुई। एक तो पहली कोशिश जब ग्रेनेड फेंका और भागने की कोशिश की, और दूसरा फिर जब दोबारा एक घर में घुसे और उस घर से दोबारा भागने की कोशिश करी। इस ऑपरेशन के अंदर हमारे अवंतीपुरा का पुलिस, आर्मी की तरफ से 50 आरआर और सीआरपी का 110 बटालियन इसमें शामिल था। ये ऑपरेशन जो है कल रात भर रहा, क्योंकि उस वक्त देर हो गई थी और सर्च नहीं कर पाए थे पूरी तरह। और सुबह जब एरिया की सर्च की गई और इसमें 2 जो दहशतगर्द हैं वो मारे हुए पाए गए। एजाज अहमद रेशी एक है और दूसरा सजाद अहमद सोफी है। दोनों से AK-47, AK-56 पकड़ा गया, काफी आर्म्स एंड अम्युनिशन, एक्सप्लोजिव मटेरियल पकड़ा गया और भी इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल पकड़ा गया। और ये दोनों ही अवंतीपुरा जिले के रहने वाले हैं। एजाज अहमद रेशी बहुत ही खतरनाक तरह का दहशतगर्द रहा है। ये बुरहान वानी के टाइम से एक्टर था और उस वक्त भी बहुत सारी गतिविधियों में शामिल था। शुरू में OGW का काम करता रहा और टेररिस्ट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता था। EDI में अगर आपको याद हो, फरवरी 16 में एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था जिसमें आर्मी और CRP के 8 जवान शहीद हुए थे। इसी ने टेररिस्ट को वहां तक ट्रांसपोर्ट किया था। Normal killing which has happened. We have seen the audio videos which were issued by Babar Qadri before he was unfortunately killed by the terrorists. As I said, we have identified the people. We would also try to get into the roots of as to how it was planned, where the conspiracy took place. But every time, it ends up with somebody working from across, and this has been done to send a sense of scare among the people that they are not able to speak truth. They are not able to talk freely that Pakistan hand is involved. They are not able to talk freely that terrorists are not becoming terrorists on their own. They are being made terrorists. That is what Advocate Babri said in his Facebook interaction. That is what he was trying to clarify. So there are people working this side of the line and that side of the line to see that situation remains disturbed, situation does not become normal. People are kept under scare and fear, but we are there. Our joint efforts are that we are trying to create an environment of peace, an environment where people can move about freely. But so long as terrorist gun and instigation by Pakistan is there, some incidents of this nature are bound to take place. You can't rule them out. So, but sir, as Pakistan will be issuing orders to kill one or the other, but how is Jammu Kashmir police going to tackle the situation so that such killings doesn't take place? Because if we talk particularly in Budgam, if one Sarpaj, now BDC chairman or somebody is decamped with the Budgam, we are seeing which is quite close to Srinagar city, it has been in news for a longer time. But Gam, there are certain places which have been used by terrorists for their movement or for their hiding. We've been able to address a couple of places where successful operations took place. We'll focus on areas which are now come to notice. Unfortunate killing of BDC chairman Bhupinder Singh ji had given fair indication that there are some more areas where militants are seeking shelter and carrying out militant activities. Those areas shall be addressed. As I said, these killings are part of a design, and JK Police, along with its partners, along with Army, along with CRPF, other forces which are working with us, our effort is one, to see that those who are involved in the killings are brought to justice. We have done it. We'll do it in future also. We have done it to a great extent, and we have done it in case of Bari. We have done it in case of Ajay Panta. We have done it in case of other civilians who were killed in South Kashmir.
And with the respect to the remaining also, definitely I can assure you that they will be brought to justice very soon. Thank you. आज आपने आई साहब को मौका नहीं दिया भाई। डीजीपी दिलबाग सिंह को आप इस वक्त सुन रहे थे, जो प्रेस वार्ता कर रहे थे और ब्रीफ कर रहे थे इनकाउंटर के बारे में। किस तरीके से ये इनकाउंटर हुआ, क्या कुछ दहशतगर्दों से बरामद किया गया है, उसके बारे में पत्रकारों से दिलबाग सिंह बातचीत कर रहे थे। आपको जानकारी दे दें कि दिलबाग सिंह ने अपने प्रेस वार्ता में ये भी ऐलान किया कि जो टेररिस्ट हैं वो उनको टेररिस्ट बनाया जाता है, वो टेररिस्ट होते नहीं है, उनको जो उनके साथ जो ट्रीट किया जाता है उस वजह से वो टेररिस्ट बनते हैं। तो कई ऐसे अहम पॉइंट्स हैं जिन पर दिलबाग सिंह अपने प्रेस वार्ता में पत्रकारों के साथ चर्चा कर रहे थे।